Assalamu alaikum. This is Hibsa Fahid. Um, we are here with the very first video from Physics 5054, that too from electricity and magnetism. In this lecture, we are going to solve a few past paper questions from electricity and magnetism. And while doing so, I'll try to emphasize some common and yet major mistakes students made in the papers I checked recently. So, yes, in this video, I'll help you clear some common misconceptions that you may have. And in case you do not, then inshallah, this video will help you boost your confidence in the topics you have already learned. So let's get started. See the very first question. It says a student uses the circuit shown in this figure right here to investigate a resistor, this resistor right here. Describe how the student uses the apparatus shown in this figure right here to obtain a range of ammeter and voltmeter readings. See, ammeter क्या बताता है? It shows the magnitude of current passing through the circuit. In this case, इस resistor से कितना current pass हो रहा है. And what does the voltmeter right here shows? The voltmeter will show the potential drop across this fixed resistor right here. राइट सो इन्होंने आपसे कहा है कि आप अपने सर्किट में ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हैं कि आपके सर्किट से पास होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड वुड डिफर एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस फिक्स्ड रेजिस्टर वुड डिफर. The common mistakes students did, they mentioned कि कैसे आप एक बार यहाँ पर 0 से 5 एम्पेयर वाली रेंज का एम मीटर यूज कर लें, दूसरी बार आप इसको रिप्लेस कर दें 0 से 10 एम्पेयर वाले एम मीटर के साथ एंड सो ऑन. सी दे डिड नॉट मेंशन मीटर की रेंज क्या रखनी चाहिए, राइट. दे आर आस्किंग डिफरेंट रेंज के करंट की वैल्यूज कैसे आ सकती है हमारे पास, या वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास कैसे आ सकती हैं, राइट. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज आप अपने सर्किट से करंट कैसे चेंज कर सकते हैं, या आप अपने सर्किट में इस रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप कैसे चेंज कर सकते हैं. सी रेजिस्टर से जो करंट पास हो रहा है, जो ये एम मीटर मेजर कर रहा है, इट इज गोइंग टू बी द टोटल करंट फ्रॉम योर सर्किट. एंड हाउ कैन यू चेंज द टोटल करंट पासिंग थ्रू योर सर्किट? Either you change the total applied voltage in your circuit, that is, हो सकता है आप एक बार रीडिंग लेने के लिए अपने सर्किट में मे बी 2 सेल्स यूज करें, दूसरी बार यू मे यूज 3 सेल्स or maybe 4 cells, right? So you are changing the voltage applied in your circuit, right? सप्लाई वोल्टेज आप चेंज करें. रिजल्ट में अगर आप अपने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो जाहिर है सर्किट से पास होने वाला करंट चेंज होगा. यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट इन द सेम सर्किट. एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यू डू नॉट चेंज द सप्लाई वोल्टेज. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द overall resistance of your circuit. And how you can change the overall resistance? इस resistor की तो value fix है. What you can do is you can change the resistance of this variable resistance. Right here is the symbol for rheostat, right? आप rheostat के terminal को slide करवा के इसकी resistance change करेंगे. Once you change the resistance of this resistor right here, we know that these two are connected in series, right? What happens in series? Series में effective resistance of your circuit is the सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. सो फिक्स रेजिस्टर की तो वैल्यू कांस्टेंट है आर. ये जो वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू है, आप इसको चेंज करेंगे, रिजल्ट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी. सप्लाई का वोल्टेज फिक्स है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो गई, रिजल्ट में सर्किट से पास होने वाला करंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट. तो आप यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, ये तो सारी एक्स्ट्रा डिटेल थी, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको होना चाहिए था. एक नंबर के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज के चेंज को यहाँ पर मेंशन कर देंगे. लाइक यू कैन राइट हियर the student will take reading at different values of variable resistance. This would eventually change the current passing through the circuit, right? Or you can mention the student would change the supply voltage and would keep on changing the voltage with regular intervals and will take the readings for current and voltage, which of course would differ. So एक नंबर के लिए कोई भी दोनों में से एक मेंशन कर दें. Then the reading obtained are shown in this table. State Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law में we used to write कि आप अपने सर्किट को कुछ सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करें, सर्किट की अपनी कुछ फिक्स रेजिस्टेंस है, सर्किट से करंट पास हो रहा है, राइट. द करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द supplied voltage,
राइट, एंड रिजल्ट में हम क्या कहते थे, रेजिस्टेंस will come out as a constant provided that the temperature and all the physical conditions are kept constant, right? So you'll write current through the resistor is directly proportional to the supplied voltage. Do not forget to write provided that the temperature and the physical conditions remains constant. Then आपसे कह रहे हैं using the results in table 5.1 show that the resistor obeys Ohm's law. यहाँ पे बेसिक गलती क्या की है बच्चों ने, what did they do, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ओमिक रेजिस्टर्स जो हैं वो रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो स्टूडेंट विल फाइनली कम अप विद द कांस्टेंट रेजिस्टेंस. What they had to mention precisely was, इन्होंने कहा यूजिंग द रिजल्ट फ्रॉम टेबल 1, राइट. सो टेबल 1 में इन्होंने किस चीज के बारे में वैल्यूज प्रोवाइड किए, they've provided you with the numerical values of voltage and current. So what you should be writing, you should be writing कि using values from table 5.1, if resistance, that is V divided by I, or the inverse of resistance, that is I divided by V, turns out to be constant for all two or maybe three values, then this shows that the resistor obeys Ohm's law, right? So आप क्या करेंगे, हम 7.6 divided by 320 करेंगे milli ampere, right? So do not forget to write exponent minus 3. And then next time you'll do 5.2 divided by 220, again 10 raised to the power minus 3. And then you'll do 2.4 divided by 100, 10 raised to the power minus 3. This is nothing but V divided by I, right? And this equals resistance. ओम्स लॉ में वी सेड कि जब आप ग्राफ भी प्लॉट करते हैं तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, राइट, यानी y ओवर x की वैल्यू शुड गिव यू कांस्टेंट. सो इन तीनों को जब आप सॉल्व करें एंड यू एंड अप गेटिंग द सेम आंसर, इसका मतलब है कि जिस रेजिस्टर की आप बात कर रहे हैं इट इज ओमिक, इट ओबेज ओम्स लॉ, दैट इज इसकी रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. Why did I mention K V over I के बजाय you can also do the same for I over V, because if you place current on y axis and if you place V, that is voltage, on x axis, you will still end up getting the straight line, right? Like in this case the slope does not equal resistance, in this case it equals inverse of resistance, right? So you can mention resistance के terms में भी or you can mention inverse of resistance के terms में भी, कि ग्राफ में जो वैल्यूज प्लॉटेड है उन दोनों के लिए जब आप रेशियो निकालेंगे सो यू विल गेट सेम वैल्यू व्हिच सजेस्ट दैट द रेजिस्टर ओबेज ओम्स लॉ, राइट. देन सो आपने जनरली वेग बात नहीं करनी कि ओम लॉ कहता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी यकीनन इसकी, नो. उन्होंने कहा यूजिंग द रिजल्ट फ्रॉम टेबल, सो यू नीड टू मेंशन दैट डेटा एज वेल. फिर आप कह रहे हैं स्टूडेंट हैज available an ammeter with 5 ranges marked. Suggest how the student makes best use of the different ranges during the investigation, right? So हमारे पास एक ammeter है जिसके लिए available ये 5 ranges हैं, right? So आप, हमने अग्री किया था आप अपने सर्किट में मीटर ऐसा यूज करते हैं जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को प्रेजेंट कर सके अच्छे तरीके से, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपकी वैल्यू बहुत छोटी है और आपने अपने मीटर की रेंज बहुत बड़ी रखी है, राइट. इससे क्या होगा, आपके मीटर की सेंसिटिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, एरर के चांसेस, इनएक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट. तो आप क्या करें, आप जो गिवन डेटा है उसको कंसिडर करें एंड देन कम अप विद द रेंज जो आपको उस स्पेसिफिक रीडिंग के लिए अपने सर्किट में यूज करनी पड़े. फॉर सपोज we have three values of currents here, 100, 220 and 320 milliampere. So we'll write 100 milliampere, let's just write 220 milliampere, and then finally we have 320 milliampere. Can you use an ammeter with the range 0.2 milliampere? No, all the readings right here are greater than this, so we cannot use this in the first place. We can also not use this, and we can't use this either. 200 मिली एम मीटर की रेंज है, इसका मतलब है इस रेंज के एम मीटर को यूज करके एटलीस्ट मैं ये वाली वैल्यू तो अच्छे से रिकॉर्ड कर सकती हूँ, राइट. एंड व्हेन इट कम्स टू 220 और 320, ऑफ कोर्स
these two are greater than 200. So the only option we are left with is we'll have to use the ammeter with range 0 to 10 ampere. Of course ये greater है as compared to the values, right? लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. अगर हमारे पास 0 से 5 एम्पेयर वाला ऑप्शन होता तो हम वो भी लेते, right? So right here we will be writing K. To record the value of 100 milliampere, we'll be using an ammeter with the range 0 to 200 milliampere. And for recording the values of current that are 220 and 320 milliamperes, we'll be connecting 0 to 10 ampere wala ammeter in the circuit. Then in the next question, figure shows the fuse inside the plug of a hair dryer. State how the fuse protects the wires in the hair dryer. इलेक्ट्रिसिटी में हमने वायर्स के ओवर हीटिंग होने को, आपकी डिवाइस के अप्लायंस के ख़राब होने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक आध बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स पढ़े थे, राइट? एंड उसमें भी अग्रीड आप सर्किट ब्रेकर लगा सकते हैं, आप फ्यूज़ लगा सकते हैं, सो ऑन. यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं फ्यूज़ कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है आपकी अप्लायंस को. फ्यूज़ में बेसिक जो हम प्रिंसिपल पढ़ते थे वो क्या होता था, हम कहते थे आपके पास इसमें एक वायर है, जाहिर है कंडक्टिंग वायर है, करंट पास होगा इससे, लेकिन हर फ्यूज की अपनी एक ऑपरेशनल रेटिंग होती है. फॉर सपोज इफ यू हैव अ फ्यूज दैट इज 0 से 10 एम्पेयर तक का, इसका मतलब है ये मैक्सिमम सर्किट से करंट जो पास होने देगा, इट वुड बी so that it cannot exceed 10 एम्पेयर, राइट? जैसे ही करंट 10 एम्पेयर से ऊपर जाने लगेगा ये वायर मेल्ट हो जाएगी, एंड क्योंकि कंडक्टर के बीच में फिर कहीं ना कहीं गैप आ जाएगा, रिजल्ट में सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एंड अब जो आपकी अप्लायंस से करंट पास हो रहा था अब वो करंट पास नहीं होगा, राइट? जाहिर है आपको बाद में फ्यूज को चेंज करना पड़ेगा इस अप्लायंस को वापस यूज करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसने आपकी अप्लायंस को खराब होने से या शॉर्ट सर्किट होने से एटलीस्ट बचा लिया, राइट? सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्यूज कैसे प्रोटेक्ट करेगा? आप कहेंगे if the current is about to exceed the operational current of this fuse या the current rating of the fuse, the wire will melt. As a result, the circuit will open and no current will pass through the circuit. Then hair dryer is rated at 240 volt and 1500 watt. It is switched on. Calculate the current in the hair dryer. जो बच्चों ने कॉमन गलती की है, right here they have taken this to be work done, which I am of course very disappointed about. See, this right here is the unit. ये physical quantity का symbol नहीं होता. This is the symbol for the unit. So what was the unit of power? So what's given right here is not work done, it is power. So they've provided us with the power, they've provided us with the voltage, and they've asked us to calculate the current. Can you think of a formula that involves these three variables? That's power is the product of voltage and current. You'll rewrite this equation so that current becomes the subject of your equation. So you'll write power divided by volts, right? So power is given to be 1500, voltage is given to be 240. You'll just divide them and you'll get 6.25. And of course, since this is current, you need to write ampere right here because इन्होंने आपको यहाँ पर provide नहीं किया unit, so you need to make sure कि आप इसका correct unit लिखें यहाँ पर. Then suggest a suitable current rating for the fuse. आपको पता है हेयर ड्रायर की जो ऑपरेशनल करंट है इट इज 6.25 एम्पेयर्स. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप अपने सर्किट में जो फ्यूज लगाएंगे वो 6.25 एम्पेयर से कम का नहीं होना चाहिए. उससे क्या होगा, आपकी डिवाइस अपने ऑपरेशनल करंट पर तो जाहिर है उसको पहुंचना ही पहुंचना है फॉर द डिवाइस टू फंक्शन, राइट? लेकिन अगर आप फ्यूज 6.25 एम्पेयर से कम का लगा देते हैं, आपकी डिवाइस ऑन नहीं होगी, पहले ही फ्यूज मेल्ट हो जाएगा. आपको जो फ्यूज कनेक्ट करना है अपनी डिवाइस में इट शुड बी ग्रेटर देन 6.25, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज दिस वुड देन इंक्रीज द चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट या फायर के चांसेस बढ़ा देगा. सो यू नीड टू write a value that is greater than 6.25 लेकिन बहुत ज्यादा ना हो. So the ideal value to write here would be 7 ampere, or you can also go with 8 or 9 or maybe 10 amperes as well, लेकिन 20-25 पर ना पहुंच जाए. And of course unit भी लिखना पड़ेगा because they did not mention the unit here. Okay, I should be writing it here.
Then the hair dryer does not contain an earth wire to connect to the plug. State the feature of the hair dryer which ensures that it is safe to use without an earth wire. बेसिक डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, बैकग्राउंड में जो हमें पता होना चाहिए, हम पढ़ते थे प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हम सिर्फ फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स नहीं यूज करते, सर्किट में एक थर्ड वायर भी होती है, दैट इज दी अर्थ वायर, राइट, जो खास तौर पे हम उन डिवाइसेस में यूज करते हैं जिनकी केसिंग मेटेलिक होती है, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लाइव वायर उस मेटल केसिंग के साथ कांटेक्ट में आए और जो मेटल केसिंग है वो खुद लाइव हो जाए, यानी करंट स्टार्ट्स पासिंग थ्रू दिस मेटल केसिंग, और फिर जब कोई भी बंदा उस अप्लायंस को यूज करने के लिए उस मेटल केसिंग को टच करे तो फिर उस बंदे को ना करंट लग जाए, राइट। इसको अवॉइड करने के लिए मेटल केसिंग वाली डिवाइसेस में हम खास तौर पे एक तीसरी वायर इंक्लूड करते थे, दैट इज अर्थ वायर, द वायर दैट इज ऑलरेडी इन कांटेक्ट विद द मेटल केसिंग, राइट। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अर्थ वायर नहीं है इसके अंदर, तो फिर हम किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे होंगे इस अप्लायंस को। हमने पढ़ा था अर्थ वायर की जरूरत उन अप्लायंसेस में नहीं होती जिनमें या तो डबल इंसुलेशन हो या फिर जिनकी जो केसिंग है वो मेटेलिक नहीं हो, वो प्लास्टिक या rubber casing, right? So what you should be writing here is double insulation. Of course, you'll be writing a complete sentence, right? The hair dryer might have double insulation or it will have plastic body or plastic casing. Do not write three plug. ऑलरेडी बता चुके हैं कि तीसरी वायर नहीं है इसके अंदर, एंड डू नॉट राइट के फ्यूज उसके अंदर कनेक्ट किया होगा, राइट, आपने कुछ तीसरी वैल्यू यहाँ तीसरी चीज यहाँ पर बतानी है। Then we have another question from Magnetism here. It says figure shows a part of a torch. Torch does not contain a battery. The torch is shaken and this causes the magnet to move towards, backward and forward through the coil. Explain why an electromotive force, that is an EMF, is induced in the coil when the magnet moves. Again, इसकी थोड़ा बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट देखें। हम पढ़ते थे सर्किट में करंट अगर आपको जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है तो सर्किट में कोई ना कोई पावर सप्लाई लगी होनी चाहिए। पावर सप्लाई नहीं है, ना डीसी ना एसी, उसके बावजूद सर्किट में करंट इंड्यूस किया जा सकता है, दैट इज अगर आप उस कंडक्टिंग वायर में से किसी ना किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं। फर्स्ट देयर नीड्स टू बी मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, number of magnetic field lines passing through the coil must keep on changing for the coil to keep this induced current। और हम कहते थे डायरेक्टली करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, उससे पिछला स्टेप क्या होगा, यकीनन उस कोयल में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, राइट। तो आप क्या यहाँ पर क्या रखेंगे, आपसे कहने एक्सप्लेन व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कोयल व्हेन द मैग्नेट मूव्स। आप कहें द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are passing through the coil originating from this magnet. As the magnet moves, the magnetic field lines cut through the coil, या the magnetic flux through the coil changes. As a result, an EMF is induced in the coil. Then state one way to increase the magnitude of induced EMF जो इसके relative motion की वजह से आ रहा है। हम दो तीन फैक्टर्स पढ़ते थे, ऑफ कोर्स एक नंबर के लिए पूछा तो आप कोई भी एक फैक्टर इधर मेंशन कर दें। हम कहते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा अगर आप रिलेटिव मोशन इंक्रीज कर दें। इस केस में अगर आप उस टॉर्च को पहले से ज्यादा स्पीड के साथ शेक करते हैं तो रिजल्ट में रिलेटिव मोशन इंक्रीज हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट एल्स यू कैन डू इज आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से रिप्लेस कर दें, जो आपके पास मैग्नेट मौजूद है उसको, राइट। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दें, आप रिलेटिव मोशन को बढ़ा दें, या आप नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल इंक्रीज कर दें, either way the amount of induced electromotive force will increase। Then, current in the coil is used to produce light from a light emitting diode in the space below. Draw the circuit symbol for an LED. Cambridge provides you with
2 to 3 pages of the symbols जो आप electrical components को represent करने के लिए अपने circuit में use करेंगे. In the same page, it provides you with the symbol for LED. LED is a diode. ये basic diode का symbol है, right? With one connection as anode and the other one as cathode. It is light emitting diode. So we'll show at least 2 rays of light that are being emitted, that are going outward from this diode. Clear? So आप inward arrows नहीं show करेंगे. You need to show arrows pointing away from this diode. So this is the symbol for light emitting diode. An LED is a more efficient source of light than a filament lamp. Explain what this statement means. आप मुझे इसके रिजल्ट में नहीं लिख कर देंगे कि एलईडी की एफिशिएंसी ज्यादा है. दैट इज प्रिसाइजली व्हाट दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? तो आपको बताना है कि एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है. हम जनरल फिजिक्स के टॉपिक में बेसिकली पढ़ते थे किसी भी डिवाइस की किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होती है. एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट. एलईडी में क्या है, आप इसको इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड करते हैं, रिजल्ट में ये आपको लाइट एनर्जी एज एन आउटपुट प्रोवाइड करती है, राइट? अगर उस लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा है तो मैं कहूंगी आउटपुट ज्यादा मिल रहा है आपको. तो अगर ये आपसे कह रहे हैं कि एलईडी फिलामेंट लैम्प के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसका मतलब है सेम इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप दोनों को प्रोवाइड करेंगे तो रिजल्ट में एलईडी कंपेरेटिवली ग्रेटर लाइट आउटपुट प्रोवाइड करेगी, राइट? सो आप ये नहीं कहेंगे कि आउटपुट ग्रेटर होगा. यू नीड टू मेंशन कि सेम इनपुट पर ग्रेटर आउटपुट प्रोवाइड करेगी एलईडी. देन we'll see this किसी और वीडियो में because it is from thermal physics. Okay, this right here is a question from electricity and magnetism. So let's see this one as well. A small electric component in a circuit needs to be protected from a strong external magnetic field. Describe how this is done and state any material use. See, um, basic concept है यहाँ पर Gauss's law of electric flux का भी, and then we have a concept that is known as Faraday's cage. लेकिन since it is not the part of your learning objective, we'll not get into this. हमें basic क्या बात पता होनी चाहिए इस question को answer करने के लिए. The thing is, मैग्नेटिज्म को आप completely shut नहीं कर सकते. What you can do is you can maybe redirect the magnetism. आप इसको channel कर सकते हैं in such a way that it does not affect the electric component that you are to protect from the magnetic field, right? So in this case मैं क्या करूंगी, ये अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पड़ा है जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैं इसे शील्ड करूं एक बॉक्स में किसी भी कंटेनर में, राइट? लेकिन आई नीड टू मेक श्योर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तक ना पहुंचे. तो मुझे मटेरियल वो चूज करना है जिसकी अपनी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा हो, राइट? जो मैग्नेटिज्म को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करके रखे एंड पेनिट्रेट ना करने दें कहाँ तक, इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तक. So can you think of a material जिसकी magnetic permeability ज्यादा है, या can you think of a material जो magnetism से बड़ी जल्दी affect हो जाता है, right? It is nothing but soft iron. So in this case, you should be writing, okay, we need to enclose the small electric component in a container that is made up of soft iron. This way, iron will channel the magnetism towards itself, but at the same time will not allow the electrical component enclosed in this iron container to get affected from this magnetic field outside. I think this is enough for these 2 marks. Then it says electromagnets have many domestic and industrial applications. First, in this space, draw a diagram of a simple electromagnet. You should not be drawing a simple bar magnet here, because bar magnet we agreed is a permanent magnet, whereas electromagnet is a material that behaves as a magnet only when current passes through it. As soon as the current passing through the material ceases, it
stops behaving as a magnet, right? So we have already studied that a coil, that is a solenoid, behaves as an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे ये बिहेव करता है, यानी ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा जब आप खुद इसे करंट सप्लाई करेंगे। तो जाहिर है अगर आप खुद करंट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई करंट की सोर्स भी होनी चाहिए। सी दैट्स अ डीसी सप्लाई हियर। बैटरी का सिंबल भी बना लें, इट वुड वर्क। a longer leg that is positive and a shorter leg that is negative। एंड फिर हम पढ़ते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करता है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से आप इंक्रीज करवा सकते हैं। उसमें एक फैक्टर ये भी था कि आप इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का बार प्लेस कर दें, बिकॉज आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल, राइट। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म को इंक्रीज करेगा। एंड देन जाहिर है आप अपनी मर्जी से इस करंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से चाहते हैं कि ये कभी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करे और जब आप चाहें तो ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव ना करे, राइट। तो उसके लिए आप क्या करें, आप अपने सर्किट के अंदर एक स्विच भी कनेक्ट कर दें, राइट। Switch is just a connection that allows us to control the current passing through the circuit. Clear? So this is what the examiner is asking you to draw here. Then state and describe in detail one use of electromagnet. We have studied electromagnets के बहुत सारे use applications हमने इसकी पढ़ी थी। हमने इसकी application credit card में देखी थी। We have seen its application in electric bells. We have seen its application in its speaker, the one with the coil in it, cone in it. And we've also seen my favorite application here, that was the scrape iron machine, right? जिससे आप मैग्नेटिक मटेरियल्स को जो है अट्रैक्ट करवाते हैं एंड देन किसी भी दूसरी जगह पर आप उसको डंप कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट यू विल नेम द एप्लीकेशन दैट इज स्क्रैप आयरन मशीन एंड देन डू यू सी राइट हियर 3 नंबर के लिए आपसे पूछा ये सवाल। सो यू कैन नॉट जस्ट मेंशन कि स्क्रैप आयरन मशीन में हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो मैग्नेट्स को या मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। यू नीड टू मेंशन, you know, some detail of the process as well. You need to mention, okay, what does the machine do when the current passes through it? What does the machine do when you switch off the current that is passing through the machine, right? So you'll mention that it has an electromagnet in it. That is when you switch the current on, that is when you allow the current to pass through this coil, that is an electromagnet. It attracts the magnetic materials, that includes of course iron as well, and the magnetic materials from the dump gets attracted towards the arm, and then you move the arm to a region where you want to dump this magnetic material, and then you switch the current through this electromagnet off. As a result, it stops behaving as a magnet, that is, it releases the magnetic material जो उसने stick किया हुआ था, जो उसने hold किया हुआ था, right? So you need to make sure, 3 basic points आप उसको name करें and आप बताएं कि जब current pass होगा तब क्या होगा and जब current आप switch off कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। डू नॉट प्लीज डू दिस कि आपने 2-3 अलग अलग एप्लीकेशंस के बस इधर नाम मेंशन कर दिए। दैट इज व्हाट आई literally seen students writing in their paper. You need not to do this, right? And electromagnet की basic description में ना चले जाएं कि ये एक coil होता है and उसको आप कोई source provide करते हैं, circuit से current pass होता है and so on। आपको उस एक application को describe करना है, आपको electromagnet को in general describe नहीं करना है। So please don't do this with your self। आपके ही मार्क्स डिडक्ट होंगे इसमें, because this clearly is not what the examiner was asking you to write। Then आपसे कह रहे हैं figure shows a solenoid। Solenoid we agreed is nothing but a coil connected to a sensitive ammeter, a device that is used to measure current। Explain what is observed on the ammeter when a student first inserts north pole of a bar magnet slowly into the right hand end of the solenoid। See, we have seen कि जो ऊपर solenoid है इसके साथ खुद कोई पावर सप्लाई नहीं कनेक्टेड, राइट। लेकिन अगर मैं इसके करीब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को लेकर आती हूँ तो जाहिर है मैग्नेट से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, राइट।
एंड जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को करीब मूव करवाऊंगी सोलेनोइड से, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will start cutting through this solenoid, right? The flux through this solenoid would change. And हमने पढ़ा है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कंडक्टिंग मटेरियल से, रिजल्ट में उस कंडक्टिंग मटेरियल से में करंट इंड्यूस होता है, एंड जाहिर है जो सर्किट में एम मीटर लगा है वो इस करंट को डिटेक्ट करेगा, रिजल्ट में एम मीटर की नीडल किसी एक साइड पर डिफ्लेक्शन देगी, राइट? एंड क्योंकि आपने मैग्नेट को स्लोली इंसर्ट करें तो रिजल्ट में स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट विल induce in the coil. As a result, ammeter will show a small amount of deflection in one direction. That is what you are to write here. First, due to the changing flux, ammeter will show deflection, that too smaller in magnitude. Do not write circuits as if current pass होगा. You need to mention the magnitude of current as well. And इन्होंने आपसे पूछा है एम मीटर पर क्या ऑब्जर्व होगा, so just make sure you mention deflection of एम मीटर here as well. सिर्फ फ्लक्स के चेंज होने तक ना रुक जाएं, ऑफ कोर्स फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन just pay close attention to आपसे पूछा क्या जा रहा है, right? We cannot possibly write everything that we have studied. Just stick to what the examiner is asking you to write. फिर आपसे कह रहे हैं when the student holds the bar magnet stationary in the solenoid, as he kept this magnet moving towards the solenoid, अब ये magnet solenoid के अंदर पहुंच चुका है and it is stationary here, right? Of course कुछ number of magnetic field lines हैं इसकी अभी भी, but the flux is not changing through the coil. इस केस में even though that there is magnetic field passing through this coil, लेकिन क्योंकि flux change नहीं हो रहा, so you should clearly mention that the ammeter will show no deflection. एक नंबर के लिए इट इज इनफ, दो तीन नंबर के लिए पूछते तो फिर आपको मेंशन करना था कि इवन दो देयर इज magnetic field, but since the flux of magnetic field is not changing, therefore no current is being induced in the coil and therefore the needle of ammeter is showing no deflection. You cannot write ammeter की जो needle है वो फिक्स हो चुकी है एक जगह पर, right? Because this would give away the idea that you are saying that maybe the current through the coil is constant, it is not fluctuating, whereas this is not the case here. Current constant नहीं हो गया, current dropped to zero. Then when the student withdraws the north pole of the magnet quickly from the right hand end of the solenoid, अब again withdraw करवा रहा है and magnet फिर यहाँ पर कहीं पर पहुंच चुका है, ठीक है? So first, the key point right here is magnet is being withdrawn and quickly. पहले केस में it was slow insertion of magnet into the coil, right? So एक बात तो आप ये mention करेंगे because पहले से opposite direction में अब magnet move कर रहा है. पहले the north pole of magnet was moving towards the coil. Now the north pole of magnet is moving away from the coil, right? So Lenz's law की description याद करें. This would make you conclude that the ammeter in this case will show deflection in opposite direction and magnet was withdrawn quickly, right? So we'll mention that the deflection is larger as compared to the one in this part one, right? So ammeter will show greater magnitude of current, that too in the opposite direction. That is what they've assigned these 3 marks for. You cannot just write कि इस बार जो है circuit में फिर से deflection होगी. You need to mention opposite direction and you need to mention the larger magnitude of deflection. Okay, the next we have from nuclear physics. Did we miss anything from electricity and magnetism? No, we did not. That's all from my side. I hope this helped you clear any misconceptions you have had about these topics. See you in the next video from, inshallah, nuclear physics. Till then, Allah Hafiz.